Hello and welcome to 3.2 TV. I am Vishakha Thakur. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर. Leading cryptocurrency are witnessing moderate gains as upbeat US economic data fueled investor optimism towards risky assets. However, robust data revived concerns over higher interest rates which capped gains. In other news, Sam Bankman-Fried was released on a $250 million bond package on Thursday while he awaits trial on fraud charges related to the collapse of FTX crypto exchange. Bitcoin held near the $70,000 mark and Ethereum was comfortable above the $1,200 level, while altcoins outperformed their larger peers. The global cryptocurrency market cap was trading marginally higher, around $815 billion, rising less than 1% in the last 24 hours. The total trading volume increased by 16% to $29.47 billion. Moving on, वॉशिंगटन एग्जामिनर की 22 दिसंबर की रिपोर्ट के अनुसार एसईसी जनरल काउंसिल डैन बर्कोविट्स से कहा कि वो 31 जनवरी को एजेंसी छोड़ रहे हैं. दरअसल सरकारी अधिकारी ने पहले FTX के फाउंडर सैम बैnkman-फ्रिड और उनके लॉबिस्ट के साथ वाइन एंड डाइन किया था. बर्कोविट्स ने कहा, 34 साल की सार्वजनिक सेवा के बाद ये मेरे लिए नई और अलग अलग चुनौतियों और अवसरों का पीछा करने का समय है. इसके अलावा बर्कोविट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन यानी CFTC के पूर्व आयुक्त भी है. इसके अलावा उनकी घोषणा उसी दिन आई जब SBF को $250 मिलियन के बॉन्ड के बदले जमानत दी गई थी. Moving on, the SEC is stepping up its scrutiny of crypto auditors as it continues to wage war against the digital asset industry. And the latest in a recent torrent of anti-crypto articles, the Wall Street Journal has reported that there will be more dissection of the work that audit firms are doing for crypto companies. According to the financial regulator, there is concern that investors may be getting a false sense of security from these crypto audits. Furthermore, many crypto companies are based offshore, so do not come under the SEC's jurisdiction. However, they are still keen to provide audits and proof of reserves to settle jittery customers and investors. Moving on, DeFi लेमा के अनुसार हैकर्स ने इस साल $3 बिलियन से अधिक की कमाई की है. लास्टली उन्होंने अक्टूबर में DeFi प्रोटोकॉल से $718 मिलियन से अधिक की चोरी को अंजाम दिया, जिससे ये क्रिप्टो हैकिंग गतिविधियों के सबसे बड़े साल में सबसे बड़ा महीना बनकर सामने आया. DeFi में Web3 इकोसिस्टम के बिलियंस ऑफ डॉलर्स मौजूद है. ब्लैक हैट हैकर्स कॉन्ट्रैक्ट में कमजोरियों का फायदा उठाने और उन फंडों की चोरी को अंजाम देने के लिए उत्सुक रहते हैं. वही व्हाइट हैट हैकर्स इकोसिस्टम में नायक बन गए हैं, जिनकी वजह से यूजर्स के $20 बिलियन से ज्यादा नए फंड को बचाया जा चुका है. Moving on, US-based Web3 company FanCraze Technologies Inc. is set to launch player cards of 4 Indian Premier League teams, Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Rajasthan Royals and Lucknow Super Giants for the Metaverse. As part of this launch, FanCraze will add Rajasthan Royals and Lucknow Super Giants to its roster of partners that include IPL teams, Chennai Super Kings and Delhi Capitals, the International Cricket Council, the Asian Cricket Council, Cricket West Indies, Virat Kohli, MS Dhoni, Rohit Sharma and 30 other players from the sport. Moving on, एक US बैंकरप्सी कोर्ट ने लिक्विडिटी के मुद्दों के बीच मौजूदा लेनदारों से $37.5 मिलियन लोन प्राप्त करने के लिए बिटकॉइन माइनर कोर साइंटिफिक प्रिलिमिनरी अप्रूवल प्रदान की है. कोर साइंटिफिक सबसे US क्रिप्टो माइनिंग कंपनीज में से एक. उन्होंने 21 दिसंबर 2022 को चैप्टर 11 बैंकरप्सी के लिए दायर किया था, जो एनर्जी की बढ़ती लागत, रेवेन्यूज में गिरावट और BTC की कीमतों में गिरावट के कारण है. लोन्स क्रेडिटर्स के एक ग्रुप से है जो कोर साइंटिफिक के कन्वर्टिबल बॉन्ड्स के 50% से अधिक के मालिक है और अदालती फाइलिंग के अनुसार $75 मिलियन के टोटल लोन डिस्बर्समेंट करने के लिए सहमत हुए हैं. Moving on, President Jair Bolsonaro of Brazil has approved a bill of crypto industry regulations most recently passed by the nation's Senate and Chamber of Deputies. The bill, signed into law on Thursday, will take effect in 180 days, by which time crypto companies in the region must adapt to the new rules.
Having passed through Parliament in late November, the bill would make it possible for crypto firms to register in the country and establish physical offices. These include firms that offer crypto financing services or those that allow for the conversion of crypto assets into national currencies. It also paves the way for a new federal agency that will regulate digital asset firms and establish a virtual service provider license. Under the law, digital assets deemed to be securities will be overseen by the Brazilian Securities and Exchange Commission, while others will be regulated by an entity yet to be established. Well, that's all in this bulletin. This is me, Vishakha Thakur, signing off. मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है वीकली रैप। Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Manoj Dara, and let's get started with the top stories for the day. Yes. Leading cryptocurrency continue to feel the heat from risk-averse investors seeking refuge in safe haven assets during the week. However, recovery in equities, especially the Wall Street benchmarks, the Dow Jones Index and Nasdaq staged a comeback on signs of strong earnings prospect have lent support to cryptocurrencies. The cryptocurrency market has been largely correlated with the S&P 500 in 2022. Meanwhile, the US dollar retreated against major currencies ahead of key economic data that is likely to provide more cues on inflation. Japanese yen resumed its ascent after the Bank of Japan tweaked its ultra-dovish policy this week. Bitcoin slumped to more than 3 weeks low. There is buying interest witnessed at lower levels. Ether too rebounded from the nearby support. Analysts are of the view that unless both markets decouple, the sideways or negative action in the equities market may not bode well for the cryptocurrency market. Bitcoin is holding steady at $16,840, whereas Ethereum is trading flat at $1,215. तो यहाँ मनोज जैसे जापानीज येन स्ट्रॉन्गर हो गया है और आगे ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी पर भी इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि कहीं कहीं ये भी एक सिग्नल हमें मिला है कि फेड रेट जो है वो रेट हाइक को, इंटरेस्ट रेट हाइक को हल्का हल्का बढ़ाते रहेंगे जब तक कि इन्फ्लेशन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आएगा। एब्सोल्युटली, ये एक 2023 का जो उनका आउटलुक है, दिसंबर 14 को जो उनकी रेट सेटिंग मीट जो हुई थी और जो कि साल की सबसे आखिरी जो रेट सेटिंग मीटिंग थी, वहां पर उन्होंने 2023 का आउटलुक भी बताया था, जिसकी वजह से मार्केट्स भी करेक्ट हुए। रफली अराउंड 10% का ओवरऑल करेक्शन हमने देखा हुआ है, which was in sync with the other markets as well. Right. So as we have already been telling our viewers that there is a big correlation between cryptocurrency market and the stock markets. So यहाँ पर अगर आउटलुक के ऊपर अगर कुछ कंसर्न्स है, दैट मीन्स 2023 में हॉकिश स्टैंस है, दैट मीन्स यहाँ पे लेकर इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होंगे, बट उन लोग बढ़ाते रहेंगे। जैसे आपने सही कहा कि यहाँ पर ऑल्दो उसका पेस थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें दे आर स्टेडफास्ट एंड दे आर नॉट गोइंग टू मूव और डिविएट अवे फ्रॉम दिस मेन ऑब्जेक्टिव टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। जापान में बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ है यहाँ पर, जो उनके जापानीज जो येन है वहाँ पे एक मूवमेंट हमने देखने में, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, एंड वी हैव टू सी दैट उसका इम्पैक्ट ब्रॉड बेस में कैसे आता है। एंड एज फार एज द ओवरऑल जनरल क्रिप्टो मार्केट इज कंसर्न्ड, हॉलीडे सीजन शुरू होने वाला है और यहाँ पे लेकर ऑल्दो न्यूज एंड एक्टिविटीज एंड डील्स विल बी ड्राई, बट देयर आर ब्रॉड बेस्ड न्यूज कवरेज विच वी आर गोइंग टू शोकेस, जिसके ऊपर सारी मार्केट्स की नजर होगी। लेट्स मूव ऑन। The next financial crisis will occur due to the private cryptocurrencies, said Reserve Bank of India's Governor Shaktikanta Das on Wednesday, adding that he still holds the view that the cryptocurrencies should be prohibited. A big statement which is coming in from the governor. और यहाँ पर लेकर अभी नहीं है, और यहाँ पर RBI हमारे जो गवर्नर हैं उनका स्टैंड भी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी एक ग्लोबल एक रेगुलेशंस की भी बात कही थी, और यहाँ पर इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंड है एज फार एज द ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज कंसर्न। ऑल्दो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, हाँ ब्लॉकचेन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न इसके लिए है क्योंकि यहाँ पर इट हैज बीन मेंशन्ड इन सेवरल स्पीचेस that is being used for drug trafficking, money laundering and other concerns, which India is strictly against. Right.
Moving on, the Enforcement Directorate has attached proceeds of crime worth 907 crore rupees and arrested 3 persons in case related to money laundering by crypto exchanges, Parliament was informed on Monday. Minister of States for Finance Pankaj Chaudhary said central GST officers have detected goods and services tax evasion worth rupees 87 crores by 12 crypto exchanges. Recovery of 110 crore rupees including interest and penalty have been made. The minister said further investigation is under process in 8 cases and 4 cases are closed on payment of tax along with interest and penalties. Further, in case of crypto exchange Zanmai Labs Private Limited, known as WazirX, assets worth rupees 289.68 crores have been seized from the exchange and its directors for violating of the provision of the Foreign Exchange Management Act, चौधरी said. तो यहाँ पर वजीर एक्स का नाम पहले भी आया है और पहले हमने एक बहुत बड़ा स्पैट देखा वजीर एक्स और बाइनेंस के बीच. फिर हमने देखा कि बहुत से वजीर एक्स के ऑफिस में उनके जो ओनर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं उनके घर पर रेड हुई. बहुत कुछ हमने देखा पास में. और अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे बाइनेंस में हमने देखा कि बहुत बड़े मेजर विड्रॉल्स हो रहे हैं ऑफ ऑलमोस्ट $3 बिलियन कि जो है विड्रॉल्स यहाँ देखे जा रहे हैं. और यहाँ पर मनोज एक ये भी खबर आई थी कि बाइनेंस से उनके ऑडिटर्स ने रिजाइन कर दिया है. व्हाट डज दिस इंडिकेट? अगर किसी बड़ी कंपनी के या एक्सचेंज के अगर ऑडिटर्स अपनी जॉब छोड़ के चले जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, सो सबसे पहले तो हमें देखने की जरूरत है यहाँ पर कि ये कनेक्शन कहाँ पे है. सो व्हाट दिस इज our view and this is not what the market participants are saying कि यहाँ पर all those entities who are associated with Binance उसमें ये broader concern क्यों होता है. अभी हमने देखा था 3 महीना पहले यहाँ पर जैसे आपने कहा कि Binance और WazirX का एक बहुत बड़ा कंसर्न हुआ था. फिर उसके बाद में they disowned WazirX and this was publicly announced और यहाँ पे लेकर एंड हेंस द ब्रॉडर कंसर्न. और अभी ये ईडी की यहाँ पर एक बहुत बड़ी लगभग 300 करोड़ का एक मामला है यहाँ पर और जीएसटी का इवेजन का मामला है. Binance और FTX में भी there was something which was going on और उसके बाद में ऑडिटर्स का जो आपने मामला किया था यहाँ पर ऑडिटर्स ने एक्चुअली रिजाइन कर दिया था एंड दैट वाज द एक्चुअल रीजन व्हाई वी हैव सीन अ विड्रॉल ऑफ $3 बिलियन ऑन द Binance exchange platform. अगर ऑडिटर्स कोई भी से फॉर एग्जांपल ये अभी से नहीं है, ये तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज जस्ट बॉर्न. फाइनेंशियल सेक्टर में कभी भी ऑडिटर्स अगर रिजाइन करते हैं दैट मीन्स इट्स अ नेगेटिव इंडिकेशन बिकॉज इन्वेस्टर्स वो एक बहुत बड़ा एक जो ऑडिटर्स हैं उनको एक इन्वेस्टमेंट जो उनका जो थीसिस है उसमें एक बहुत बड़ा पिलर होते हैं ऑडिटर्स. अगर ऑडिटर्स को ऑडिट करने के समय में अगर कुछ रॉन्ग डूइंग्स अगर उनको मिलती है दैट व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज्ड टू देम, दैट इज द रीजन व्हाई दे come forward and they resign and they don't take they disown that statement कि यहाँ पर जो उनके स्टैम्प लगती है वहां पर उनका कोई भी से है. That is the reason why this is a big concern as far as the market participants. Okay. All right, moving on. The Indian government answered 2 sets of questions about cryptocurrencies and its regulations on Monday by the various members of Lok Sabha, the lower house of the India's parliament. Parliamentary member Bharat Ruhari asked the Minister of Finance to state the current status of the cryptocurrency bill, which was due for being tabled during the winter session of 2021 of the Parliament and the time frame within which the cryptocurrency bill would be tabled and subsequently be open for the public inputs. Pankaj Chaudhary, Minister of the State in the Ministry of Finance, replied without providing a specific time frame. He said, crypto assets are by definition borderless and require international collaborations to prevent regulatory arbitrage. So this is something which is a long due था और यहाँ पर मांग तो हुई है बिकॉज यहाँ पर हमने देखा है कि इंडिया में बिकॉज ऑफ द टैक्स जो हमने इम्प्लीमेंट की हुई है उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत बड़ा एक वॉल्यूम में ड्रॉप देखने मिला है. और यहाँ पर टीडीएस के चलते हुए भी यहाँ पर बहुत बड़े कंसर्न्स है. यहाँ पर बैक एंड फोर्थ हो रहा है. बिल टेबल होने वाला था, उसके बाद में समर सेशन में भी नहीं हुआ और अभी विंटर सेशन आ गया है. एंड दे आर आस्किंग कि व्हेन इट विल बी टेबल और टेबल होने के बाद में या फिर रेगुलेशंस को लेकर अगर कुछ मूवमेंट होती है दैट विल बी अ बिग साइन ऑफ रिलीफ फॉर द एंटायर क्रिप्टोकरेंसी मार्केट. और सवाल ये भी सवाल उठाया गया कि किस तरह से सेग्रीगेट किया जाएगा कि NFTs के सेक्शन में आएंगी या ब्लॉकचेन एसेट्स किस में आएंगे, डी एप्स किस में आएंगे. तो उस पर भी आई थिंक अभी भी क्लियर आंसर नहीं मिला है और यही कहा गया है कि इस पर जो है जवाब या कोई डिसीजन वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही लेगी.
Fantastic. Moving on. Moving on, the Indian government has revealed that it has received 60 crore rupees in TDS from the trading of virtual digital assets. With the government set to present the latest budget in February 2023, industry groups have been lobbying the government to reduce the TDS on digital asset transfers. तो हमने देखा तो ये जो इतना हेवी टैक्स लगाया गया था, पहले 30% टैक्स है, उसके ऊपर 1% TDS है, तो ऑब्वियसली उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो पड़ा और बहुत सारी एक्सचेंजेस कंपनी जो है वो इंडिया छोड़ के दुबई या और क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज में सेटल डाउन हो गई. तो ये जो नंबर है वो TDS वो है कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है उसका 1% है. right. जो TDS जो वॉल्यूम हुआ है, तो लगभग if you say that 1% is 60 crores, so 100% is 6,000 crores. So 6,000 crores का इंडिया में वॉल्यूम हुआ है और उसका जो गवर्नमेंट को ये that means still there is lot of volume activity. There are a lot of trading activities rather that is happening in India. और यहाँ पे लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी है कि because markets भी नीचे हैं और यहाँ पे we have already done a story on how Indian investors have been saved because of the government policy as far as the crypto is concerned. Right. But ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर since it's unregulated, so यहाँ पर investors को they have to consult their financial advisor before making any investment bets in cryptocurrencies. Moving on, Sam Bankman-Fried, the jailed founder of the collapsed cryptocurrency exchange FTX, has been extradited to the United States, where he faces criminal charges in the Bahamian authorities have said. The U.S. Attorney's Office for the Southern District of the New York charged Bankman-Fried, which is aged 30, with 8 criminal counts including fraud, conspiracy, and money laundering offenses, including making illegal political contributions. The 30-year-old could potentially spend the rest of his life behind bars. So that is something, वो तो I mean that time will tell. Because एक बहुत बड़ा concern हुआ है, लगभग $26 billion का एक बहुत बड़ा जो ecosystem था वो collapse हुआ है. Only and only because of wrong decisions. Right. Although you are successful in early part of your life, but वहाँ पर एक sustained wisdom आना चाहिए because यहाँ पर आप you are playing with a lot of investors' money. Alameda Research और prop हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि यहाँ पर prop trading और exchange business कभी भी साथ में नहीं जा सकते हैं. और वहाँ पर जो उन्होंने market making activity की है उसका result हम देखने मिल रहा है यहाँ पर कि वहाँ see that is something that the Bahamian authorities or the US authority will take care of it. But यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि how safe are the exchanges और कितना रिसर्च होनी चाहिए कि आपको एक सेफ एंड साउंड एक्सचेंज सिलेक्ट करें बिफोर मेकिंग एन इनरूट्स और स्टेपिंग इनटू दिस क्रिप्टोकरेंसी यूनिवर्स. राइट. So moving on, bankrupt crypto exchange FTX will attempt to recoup voluntary payments made to third parties prior to its collapse, pursuing them in court if necessary. These payments may include founder and former CEO Sam Bankman-Fried's political donations in recent years. A major pro-Democrat political action committee plans to return $3 million in donations made during the 2022 midterm elections by former FTX executives, including disgraced founder Sam Bankman-Fried and the defunct exchange's former head of engineering Nishad Singh. तो ये हमने सुनी खबरें कि बहुत गलत डिसीजन तो फाइनेंशियली लिए ही Bankman-Fried ने, लेकिन साथ ही बहुत सारी पॉलिटिकल डोनेशंस भी उन्होंने दी बिकॉज वी नो ही इज लिंक्ड विद पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी. तो अभी कहा जा रहा है कि वो सारी जो डोनेशंस हैं वो वापस मांगी जा रही है, जहाँ पे एक पार्टी ने तो 3 मिलियन. क्या ये बैंक थे, क्या ये NBFC थे यहाँ पर जो लैंड कर रहे हैं और अपना पैसा दिया हुआ वापस उनको चाहिए? और यहाँ पर इट हैज बीन टर्म्ड एज डोनेशन. डोनेशंस का मतलब ये है कि आप आपके खुद के विल से विलिंगली आप उसको पार्टी को डोनेट कर रहे हैं सो दैट वो जो ऑब्जेक्टिव है वो पार्टी का वो कंप्लीट हो सके. राइट. That is something which they have to understand that whatever is going on, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. ये Sam Bankman-Fried को ही समझ में आ रहा है. Big red flag. All right, moving on. In an interesting bit of news, a scammer spent a month planning a con in which they stole 14 Bored Ape NFTs from one person. The scammer convinced the collector that they wanted to pay $13,000 to $17,000 to license a Bored Ape for use in animation by posing as a casting director at a real film production company, complete with a fake website, a fake partner company, and fake individuals pretending to have signed deals with the company. After some back and forth with legitimate-looking contracts and falsified emails purporting to be from the real company's real founding director,
the NFT collector was asked to sign a contract using their crypto wallet via the fake company partner's website that has been actually set up. When the collector did so, the smart contract emptied the collector's wallet of its 14 pricey Bored Ape NFTs before accepting the highest offer on each of the Bored Apes, netting roughly around 852.9 Ether. The scammer exchanged the stolen Ethereum for the DAI stablecoins, stealing $1 million in DAI. This is something which is really, I mean, यहाँ पर स्कैमर्स कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेते हैं, है ना? स्कैमर्स कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेते हैं और यहाँ पर ये हमने बहुत बार देखा हुआ है कि यहाँ पर बी इट क्रिप्टो करेंसी और बी इट एनी अदर मार्केट यू कैन नॉट गिव अवे योर, अगर ये स्टॉक्स में भी होता है, यू कैन नॉट ट्रांसफर योर स्टॉक्स टू एनीवन, राइट? सो दैट इज समथिंग व्हिच दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ मैटर ऑफ $1 million और नए तरीके आते रहेंगे, बट इट्स होल्डिंग योर असेट्स with you, that is more important. You do not have, you cannot share. कोई exchange कोई आता नहीं है ऐसा आपको बताने के लिए कि हमको आप आपका ये दे दीजिए, हम आपको उसको ट्रांसफॉर्म करके देंगे. That is something which you have to understand, that you are not here to share your assets with anyone. That's a trap, right? So moving on, Meta, the social metaverse company, is planning to continue to develop metaverse and VR-related projects during 2023. Andrew Bosworth, head of the metaverse division called Reality Labs, explained that approximately 80% of Meta's total investment is supporting its core business, with the remaining 20% going to Reality Labs. Meta CEO Mark Zuckerberg said he still has a long-term vision for the metaverse despite losing almost $13 billion and subsequently laying off 11,000 employees. तो ये मार्क ज़करबर्ग ने कई बार क्लियर किया है कि चाहे वो उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन मेटावर्स के लिए उनके बहुत बड़े प्लान्स हैं और उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे. और हमने देखा भी अभी 2 क्वार्टर्स में ही $13 बिलियन का उनको नुकसान हो चुका है, लेकिन फिर भी वो जो 20% की इन्वेस्टमेंट है वो उसमें वो डालना चाहते हैं. 11,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है और ये सुनने में भी आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर 2023 में $19 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट वो अभी और मेटावर्स में करने वाले हैं. बिल्कुल ये विजनरी है. ये सब जैसे स्टीव जॉब्स वो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. जब भी उन्होंने इसका फेसबुक वाज व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, किसी को पता नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी वो बन जाएंगे. इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 16,000 करोड़ का टॉप लाइन है उनका. बिगेस्ट मीडिया कंपनी के नाम से भी माना जाता है फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम. सो वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट अगर वो मेटावर्स पे अगर बेट कर रहे हैं, उन्होंने नाम भी चेंज किया, दैट मींस ही हैज seen something in the technology, or hence he is making a bet into it. And of course, yes, and this is the reason why people believe in such visionaries. Right. Moving on, the price of DogeCoin dropped almost 10% and is currently trading at $0.07 following Elon Musk's latest Twitter poll asking if he should step down as the head of the social media platform. The original meme coin has seen its price pump since the one-time richest man in the world bought Twitter in October. On October 27th, when Musk officially purchased Twitter, the price of Doge was $0.07. By November 1st, the Dogecoin was trading at $0.14, with the coin falling and rising ever since. So that is something, which is, we have seen that कि Doge एक जो popular मीम कॉइन हम जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर एलॉन मस्क एक बहुत बड़ा रीजन है डॉज कॉइन के पीछे, जहाँ पर उन्होंने बहुत बार हमेशा डिस्क्लोज भी किया हुआ है बिटकॉइन में उनका होल्डिंग है, डॉज कॉइन में भी उनका होल्डिंग है. और ट्विटर आने के बाद में हमने ये एक्टिविटी पिकअप होती हुई देखी थी. एंड ये पोल है, यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा डिसीजंस भी लिए थे कि यहाँ पे हायर एंड फायर पॉलिसी भी उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया था. एंड नाउ ही इज लुकिंग आउट फॉर सम ऑफ द अदर इंडिविजुअल हु विल लीड, who will spearhead this organization and take it to the next level. तो भाई डोज कॉइन को हमेशा वो प्रमोटर तो उसके हैं ही, वो जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका फर्क पड़ता ही है डोज पे. तो अभी हम देखा है कि उनके नए पोल से डोज में हमने बड़ी गिरावट देखी है. Right. All right, that's all there is in today's weekly wrap. This is Manoj Zara signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.TV. Have a great day. Thank you.